Manager Sister Aruna, Principal Sister Navya, the staff and students of St. Joseph's Convent Girls Senior Secondary School, Kant, I take great pleasure in according you all a very warm welcome to our cultural program. I am Shubhangi Yadav of Class 12 Science, and I am Ananya Gupta of Class 12 Commerce, and we are the anchors for the first part of the program. As you can imagine, there's great excitement backstage as our young performers and artists get ready for their moment in the spotlight. Our chief guest and guest of honor have both arrived. They have both been welcomed and are being escorted to this hall by our principal, Sister Navya, and senior members of the staff. To please introduce our chief guest and guest of honor to our audience. Ladies and gentlemen, our chief guest this evening is Shri Praveen Kumar, Indian Ordnance Factory Services, from the 1991 batch of the Indian Civil Services. Shri Praveen Kumar completed the foundation course from the National Academy, Hyderabad, and the induction course from the Ordnance Factories Staff College, Nagpur. In his long and distinguished career, Shri Praveen Kumar has served in various capacities in the ordnance factories of Kanpur, Kolkata, and Jabalpur, handling sensitive and important matters in the Ministry of Defence is his forte. He handles important responsibilities related to the Armoured Vehicles Nigam Limited or the AVNL, corporate policies and procedures, capacity building and training programs, apex management, and business strategy needs. At present, he is the chairman of a number of committees in AVNL, and these are the Human Resource Committee, High Level Committee, Corporate Strategic Policy Group, the CSR Cell, and the Security Committee. Shri Praveen Kumar is currently serving as the Chief General Manager, Vehicle Factory, Jabalpur. On behalf of the Josephite family, I extend a very warm welcome to you, sir. I invite the Violet's House Captain, Ayushi Topo, to present our chief guest with a bouquet of flowers. It is a moment of great pride, ladies and gentlemen, to us as a school, as we welcome one of our very own as the guest of honor, an alumna of St. Joseph's Convent, Sadar Jabalpur, Mrs. Sampada Sarah Hujjar, Joint Collector and Chief General Manager, HR and Administration at NPEZ Jabalpur. And in a clear departure from the official protocol, I shall be addressing our guest of honor as I used to address her when she was in my class as Sampada, who belongs to the 2012 batch of our school. After completing her schooling with distinction, Sampada graduated from Jabalpur Engineering College with a degree in Electronics and Communication. Whilst in college, she joined the NCC and represented India as a cadet ambassador to Sri Lanka under the NCC Youth Exchange Program. In 2017,
Sampradar taught the Madhya Pradesh Public Service Commission examination and was appointed as the Deputy Collector in the government of Madhya Pradesh. She is presently posted as Joint Collector and Chief General Manager, HR and Administration at MPPZ, Chandipur. Welcome back, Sampradar. I request the Violet's House Vice Captain, Sejal Lalit Patil, to present a bouquet to our guest of honor. Thank you, ma'am. I also take this opportunity to accord a warm welcome to Sister Valentina, Principal of St. Joseph's Convent, TFRI. I request Marguerite's House Vice Captain, Ashvika Pillai, to present Sister Valentina with a bouquet of flowers. And we are indeed privileged to have in our midst Emeritus Bishop Gerald Almeida, Bishop of the Catholic Diocese, Captain of the Rosettes, Gia Kalvari, will present a bouquet to the Bishop. There's a correction, ladies and gentlemen. Bishop is on the way and is still to arrive. Thank you, ma'am. We shall now begin our program by invoking God's presence amongst us with the traditional lighting of the lamp. May I invite our chief guest, our guest of honor, our principal, Sister Navya, Ma'am Suman, Ma'am Anubha, and our school captain, Ananya Gupta, to light the lamp. During this ceremony, Arisha Ali of class 10 will sing "There is a Candle." The school choir will now sing the hymn to Saint Joseph, the patron saint of our school. Joseph.
Kaleidoscope. A kaleidoscope contains mirrors and pieces of colored glass of different shapes. The reflection of these pieces produce changing pattern when the kaleidoscope is rotated by the viewer. I am sure many people in the audience have first-hand experience of seeing the wondrous patterns that a kaleidoscope produces. You know, Ananya, no two kaleidoscopes are the same or produce the same pattern. Yes, and in the same way, no two individuals and their experiences or talents are identical. What you will see today is a kaleidoscope of talents that we Josephites possess. Cultural program at St. Joseph's have always started with the opening chorus. This year, in the opening chorus, you will hear Bienvenidos a todos. BM what? Bienvenidos a todos. What language is that? That's not English. You are right. That is Spanish. It means welcome to all. The school choir will now present before you the opening chorus. To you, to share this.
of touching hearts and expressing what words often cannot. It brings harmony, emotion, and energy to every celebration. Up next, we have a captivating performance by our school orchestra, ready to enchant us with their beautiful selection of melodies. So sit back, relax, and let the rhythm of music take you on a melodious journey. After that melodious journey, we would like to introduce a true hero to our audience. Ladies and gentlemen, hold on to your wallets, hang on to your phones. Ladies, look out for your jewelry, because the man we're about to introduce has a very interesting business model. He steals from the rich and gives to the poor. Yes, the first GST collector of history, or give to society tax. Some call him an outlaw, some call him a hero, but honestly, he was way ahead of his time. Yes, if Robin Hood had been alive today, he'd have his own NGOs, Instagram account, and probably a TED Talk titled From Forests to Funds, the Art of Redistribution. So brace yourself as we welcome the OG influencer, the man who made archery fashionable, the pride of Sherwood, Robin Hood.
very, very long time ago, in an age before our time, when kings ruled with iron fists and castles touched the skies. These were times of swords and shadows, of loyalty and betrayal. The year was 1911. The heart of medieval England, King Richard was leaving his kingdom to go into battle. Through a dance drama, which is an adapted version of the all-time favorite, Robin Hood and His Merry Men, we wish to give you a message. We present before you the legend of Greenwood, Robin Hood. Here, I leave for war at the break of dawn. While I am away, I leave the reins of the kingdom in the hands of Prince John. Long live the king! Hail to his majesty! Richard the Lionheart, defender of the realm, shield of the weak, and pride of England. We present a dance for our valiant and glorious king. We all stand together, joined here in friendship today, proud of all that binds us, our love and support on display. We come here as brothers, as sisters, as people, as one, to share in a moment and know that our future's begun. Mirror, mirror, in my hand, who's the richest in the land? Oh, right, it's me. Sent for the royal hairdresser. A hair of mine
is out of place. At last, the throne is mine. Mine to rule, mine to revel. With King Richard away, the crown sits upon my head, and the wealth of Nottingham shall flow into my hands. This is an occasion to celebrate. Let the music play, and all at court join in the revelry. Send word across the lands, summon every lord, baron, and merchants. In the verdant green forests of Sherwood, in Nottingham, there lived a famous outlaw called Robin Hood, who was known far and wide. Robin himself and all his merry men lived apart from society, yet they were greatly loved because no one went empty-handed if they came to Robin for help in time of need. Have you heard about Robin Hood? Yes, I did hear something about a man robbing the rich to help the poor. Do
you think Prince John can catch the people's favorite Robin Hood? I walk the path of ancient knights, through fire, blood, and darkest nights. My sword is sharp, my heart is cold, for honest flame I fight untold. Raise your sword, stand and fight, in the name of truth and light. No fear inside, no turning back. The Knight's Oath leads the attack. Blood and honor, pain and trust. In steel and fire, we fight or rust. The backs of the poor continued to break under the repressive tax regime. The downtrodden felt they had no one to turn to, no one who would help ease their problems. We have spent too much on celebrations. The king on his return will demand answers. No problem. Just hike up the taxes that the common people pay. Double the taxes. Sire, but my child has not eaten for days. Sire, this is my last coin. It's all I have. I don't care. Pay your taxes, even if you have to sell your shoes.
I have good news for you. King's tax collectors are going by south of the forest. Their pockets heavy with gold, taken from the poor people. Let's lighten their load and brighten some lives. From now on, no more hunger, no more fear. You are not forgotten. And so, the rebel Robin Hood's heart danced not for gold, but with courage. For those who had hearts of gold, the money collected in taxes went back to the poor. Robin Hood made sure of this by taking from the rich what they had forcibly taken from the poor. The sheriff was no fool. He knew that Robin Hood couldn't resist a challenge, and that too a test with a bow and arrow. Robin's sure shot was going to take aim, and this is the very reason for which the sheriff organized an archery contest. Robin Hood is going to show up for the contest. I am certain. When he shows up, bam, trap. Let's see him dance his way out of this. No one can be better than my men.
cold, the sea is grey. Men of steel with a harsh gaze, and so hard from rowing and swords, they don't fear the furious storms. An ancient fire burns in their eyes, for fame and honor, a warrior's prize. Wooden boat stands on the high sea, each plank sings of pain and misery. Men of steel, they cry the ancient verse to Valhalla until the last hearse. The dragon's head looks up with pride, it leads us through the ocean's tide. Every archer in Nottingham gave their best shot, but Dame Luck did not smile on them until... Does anyone else want to try their luck? The contest is still open. That's Robin. I can tell by his walk. It's my turn. Let my arrows speak, louder than a crown. Guards! That's Robin! Seize him immediately! I will find a way to rescue my hero. His Majesty, the King! Prince John? What is this mess? You are dethroned. Robin Hood, at last, I get to meet you. I have heard of your good work. News has spread far and wide of your heroic deeds. By my hand and by the grace of God, I crown thee, Robin Hood. I don't need a crown, Your Majesty. Let the people shine.
And thus, Robin Hood turned into a legend. Not with gold, but with a golden heart. It's our turn now to contribute to society, to empower the poor, not oppress them. All of us need to be brave. Be just. Be kind. Each one of us need to be a Robin Hood to someone. Let us first introduce ourselves. Good evening, everyone. I am Ishika Pandey of Class 12 Commerce. And I am Yashika Sajanani of Class 12 Commerce. And we are the anchors for the next part of the program. Yes, Yashika, I have too become a huge fan of Robin Hood. Ishita, music is an inseparable part of our lives. It is. And our school orchestra is waiting to delight the audience with their next selection of songs. One of the groups which gained enormous popularity during the 80s was ABBA. We are going to present one of their most popular songs, I Have a Dream. It is a song of hope and perseverance inspired by Martin Luther King's famous speech, I Have a Dream. If
on Instagram. कुछ ऐसा ही दृश्य आप लोगों ने अपने घरों में बार-बार देखा होगा। बच्चों के हाथों में मोबाइल आते ही उनके सुनाई देने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसी विषय पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, 21वीं सदी का फसाना। विक्रम बेताल विक्रम बेताल विक्रम बेताल विक्रम बेताल। यह कहानी है उज्जैन के राजा विक्रम की, जो एक योगी के कहने पर बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जाना चाहता है। पर बेताल भी कम चालाक नहीं है। राजा को कहानी के जाल में फंसाकर बार-बार भाग जाता है। आप सभी ने बेताल पच्चीसी कहानियाँ तो सुनी ही होंगी, लेकिन इस बार बेताल विक्रम को 21वीं सदी का सच सुनाने जा रहा है। बेताल रुक, कहाँ भागा जा रहा है? विक्रम, वापस चला जा। मैं तेरे वश में आने वाला नहीं हूँ। ये मेरा जंगल है, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलेगा। हा 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 हा। वाह विक्रम, तू तो बड़ा साहसी और निडर निकला। चल, रास्ता लंबा है। समय काटने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। यह 21वीं सदी के घर घर की कहानी है। आज कौन सी नई पहेली लाया है बेताल? इस बार पहेली नहीं, 21वीं सदी का सच लाया हूँ। चल, तुझे सुनाता हूँ और दिव्य दृष्टि से दिखाता भी हूँ। याद रखना, यदि तेरा जवाब मेरे सिवा किसी और ने सुना तो मैं फिर से रफू चक्कर हो जाऊंगा। हा 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 हा। गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ। गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ। खुशी, चलो बेटा खाना खा लो, अब मोबाइल छोड़ो। नहीं मम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। पहले मुझे मोबाइल चाहिए। बेटा, तू तो मेरी गुड गर्ल है ना, चलो खाना खा लो। नहीं 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 मम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। पहले मुझे छोटा भीम देखना है। बेटा, मुझे बहुत देर हो रही है, बहुत सारा काम पड़ा है, चलो जल्दी से खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे पहले छोटा भीम देखना है। देवा रे देवा, भाभी क्यों परेशान करती छोटी बच्ची को? दे दो ना मोबाइल। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है विक्रम। चल, तुझे एक और परिवार दिखाता हूँ। हा 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 हा।
अपलोड ही नहीं हो रही है। ऐसे कैसे बनूंगी मैं इन्फ्लुएंसर? ओह नो, ये गेम भी ना बार बार यहीं आके अटक जाता है। ओपोनेंट फायरिंग कर रहा है और इधर मेरा हीरो तो हैंग हो गया है। ओफो, पता नहीं ये बच्चे क्या करते हैं। मेरा क्रिकेट मैच बफरिंग पर अटक गया है। जब तक गेंद पहुंचेगी तब तक तो बैट्समैन ही रिटायर हो जाएगा। अरे ये वाईफाई को क्या हो गया है? मैं तो YouTube पर पनीर लबाबदार की रेसिपी देख रही थी। अब बताओ, पनीर बनेगा या खिचड़ी? तुम सब मेरा नेट खत्म कर रहे हो। मेरा मैच रोक दिया है। नहीं पापा, आपके मैच के वजह से ही नेट खत्म हो रहा है। पापा, मेरी तो सोचो, मेरे गेम को तो हाई स्पीड चाहिए। अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरे सारे दोस्त मुझे नूब कहेंगे। और अगर रेसिपी नहीं मिली ना तो तुम सबको कच्चा पनीर ही खाना होगा। देवा रे देवा, सगळे असे मोबाईल मध्ये घुसले जैसे पराठे में आलू। अरे बेटा, मोबाइल में इतना खो गया है कि दो मच्छर मुंह पर बैठे हैं, फिर भी डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर चल रहे हो। आई है दादी, छोड़ो सब काम, हाथ में चश्मा, बालों में शाम, कंघी घुमा के स्टाइल बनाए, दिल तो यंग है, दुनिया सताए। अरे वाह, यहाँ तो वाईफाई का महाभारत ही छिड़ गया है। सभी एक से बढ़कर एक योद्धा हैं और मैं तो 5वीं पीढ़ी हूँ, 5वीं 5th जनरेशन, यानी असली 5G। अखबार पढ़कर मजे कर रही हूँ, न बफरिंग, न रील और न कोई पासवर्ड के झंझट। तुम सब वाईफाई में अटके रहो, मैं तो फ्री फायर पर चल रही हूँ। यह तो बस शुरुआत है विक्रम, देखता जा। हा 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 हा। पापा, मुझे होमवर्क मिला है, मुझसे नहीं बन रहा, प्लीज बता दो ना। बेटा, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, जाओ मम्मी से पूछ लो। अरे श्रुति, तुम्हें पता है कल मिसेस शर्मा अपनी नई ड्रेस में रील्स बना रही थी। 1 घंटे बाद मुझे मैसेज करती, मुझे 200 लाइक्स मिल गए। अरे पूरे टाइम ऑनलाइन शॉपिंग, रील्स, बस। अच्छा। मम्मी, मुझे होमवर्क करा दो ना, मुझसे नहीं बन रहा है। अगर मैंने नहीं किया तो मुझे कल मैम डांटेंगी। बेटा, अपने रूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। और चिंटू की मम्मी की रील्स देखी? टी टाइम रील्स, ब्रेकफास्ट रील्स और इंस्टा पे डांस। ओह नो, मम्मी और पापा दोनों ही बिजी हैं। आइडिया, क्यों ना मैं ChatGPT से ही पूछ लूं। मम्मी, आप कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या हो गया बेटा? बोलो, क्या हुआ? मम्मी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये मेरी आंखों को क्या हो गया? सुनिए, देखिए ये क्या बोल रही है। इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
बेटा, क्या तुम मुझे भी नहीं देख पा रही हो? मैं तुम्हारा पापा। सुनिए, सुनिए, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। दिस इज समथिंग सीरियस। देखिए ना डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हो गया है। बेटा, क्या तुम बहुत मोबाइल देखती हो? सच सच बताना, डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना। जी सर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। सर, मैं पिछले कई महीनों से अंधेरे में मोबाइल देखती आ रही हूँ। अंधेरे में? अंधेरे में क्यों देखा? जब मम्मी पापा सो जाते थे तब मैं मोबाइल देखती थी। दिस इज समथिंग वेरी कॉमन नाउअडेज। क्या आपने अपनी बेटी को अलग मोबाइल दिया है? जी हाँ डॉक्टर, मुझे भी अपने मोबाइल पर दफ्तर का काफी काम होता है। सर, दिन भर घर का काम करने के बाद मुझे भी मोबाइल की जरूरत पड़ती है। आप लोगों की इतनी छोटी सी जरूरत ने आपकी बेटी की आंखें खराब कर दी। अब आपको इसे एडमिट ही करना होगा। चलो, अब जल्दी से हम इसे एडमिट कराते हैं। माननीय अभिभावकगण, आपने देखा कि कैसे हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। पेरेंट्स को लगता है बच्चों को सारी सुविधाएं देकर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को अपना मित्र मानिए, उनकी छोटी छोटी बातों और समस्याओं को सुनिए, उनकी शंका का समाधान कीजिए और बच्चों का भी फर्ज है कि अनुचित जिद ना करें। मोबाइल का सदुपयोग करें ताकि भविष्य में आप स्वस्थ रहें और सफलता प्राप्त करें। देखा विक्रम तूने, यही है आज की सदी का हाल। अच्छा बता विक्रम, क्या मोबाइल का उपयोग करना सही है? तू नहीं बोला तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हा 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 हा। अगर मोबाइल का उपयोग संयम से किया जाए तो यह वरदान है, लेकिन जब इसका दुरुपयोग होता है तो यह अभिशाप बन जाता है। एक ओर मोबाइल ने बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, पढ़ाई छूटी, आंखें खराब हुई, परिवार से दूरियां बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर मोबाइल शिक्षा, जानकारी और त्वरित संपर्क सब देता है। सही जवाब विक्रम, तू तो बड़ा ज्ञानी और चतुर निकला। पर मैंने कहा था ना कि तेरा उत्तर कोई ना सुने, पर यहाँ तो सभी दर्शकों ने सुन लिया। तू शर्त हार गया। ले, मैं तो अब चला विक्रम। हा 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 हा। रुक बेताल, रुक। हा 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 हा। विक्रम 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 बेताल बेताल विक्रम 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 बेताल बेताल विक्रम 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 बेताल 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 विक्रम 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 बेताल बेताल विक्रम बेताल विक्रम बेताल। विक्रम विक्रम बेताल बेताल विक्रम 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 बेताल बेताल होश उड़ा देने वाली, सबका मन छूने वाली, विक्रम और बेताल की अमर है कहानियाँ। सबकी अकल का ताला खोल बुद्धि ज्ञान बढ़ाती है, नई नई बातों का ये